Hello everyone. So, first of all, I thought I'll just come here and quickly say thanks to every one of you. मुझे इतने सारे DMs आए इंस्टा पे फेसबुक पे एंड ट्रस्ट मी मतलब इतना इतना हेल्प मिला लाइक everyone has tried real hard to help us in however way possible and it I mean thank you so much for all the love and blessings. I feel really blessed to have such great friends and family. So and हाँ आपको quick update. So I feel pretty recovered now from COVID. I will be giving my sample today. And another news is that Pratik's dad also got discharged from hospital. So he was brought home. So I think things are settling down for us and hopefully will get better and better. So I just thought I'll come here to share my COVID journey, just to summarize everything, how I felt, and what symptoms I developed. Now, उससे पहले प्लीज़ नोट कि आई एम लिविंग इन अ प्लेस वेयर वी हैव ऑल कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स लाइक यहाँ पे सिर्फ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को लाया जाता है एंड एवरी वन हैज़ देयर ओन जर्नी एवरी वन इज़ फाइटिंग विद कोविड इन अ डिफरेंट वे द सिम्टम्स आर डिफरेंट there are people who are like totally asymptomatic कोई उनको अभी तक 7-8 days हो गए हैं but they literally have no symptoms. Then there are people who are just having bit of cough, sore throat, and then there are people who are struggling with fever. So it's not like one pattern which goes with everyone, but what I'll share is how were things with me and what did I do to treat it. Now another question which I people keep asking me through messages कि आपको कोविड कैसे हुआ, हाउ डिड यू गेट इट फ्रॉम वेयर. सो बहुत डिफ़िकल्ट है इस क्वेश्चन का जवाब देना क्योंकि आई फ्लू फ्रॉम इंडिया टू मालदीव्स. आई there were people at the airport, there were people in the flight. रिजॉर्ट में there were मेरे रिजॉर्ट में भी आई गॉट टू नो दैट देयर वर 1-2 केसेस मोर जो मुझसे एक दिन पहले हुए थे. बट रिजॉर्ट वाज टेकिंग अटमोस्ट प्रिकॉशंस. मतलब जब हम रेस्टोरेंट में जाते थे पीपल यूज टू वेयर मास्क. दे यूज टू बी अ टेम्परेचर चेक. जो वेटर्स थे दे सर्व द प्लेट्स. मतलब हम लोग खुद से अपना प्लेट नहीं लेते थे. सो वेटर्स यूज टू टेक आर प्लेट्स एंड आस्क अस कि आपको क्या क्या चाहिए एंड यूज टू फिल आर प्लेट्स देयर. सो वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आंसर कर सकते कि कहाँ से आपको कोविड हुआ. एंड आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू ब्लेम एनी वन एंड ऐसा बैक ट्रेसिंग करना अब विद कोविड बहुत डिफ़िकल्ट हो गया. आई थिंक जब बिगिनिंग था तो इट वॉज़ ईजियर टू बैक ट्रेस बट आई डोंट थिंक सो कोई फ़ायदा है कि आप पीछे जाएं बैक ट्रेस करें एंड देन यू ब्लेम समबडी. आई डोंट थिंक सो इट मेक्स एनी सेंस. तो अगर आपको हो गया है अनफॉर्चुनेटली देन जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हाइड्रेट वेल एंड एंड यू नो जस्ट अपने रिकवरी पे ध्यान दे रहा है. एक और बात ये कि इट टेक्स टाइम टू डेवलप सिम्टम्स. ठीक है. तो वट एवर रिसर्च आई हैव डन तो मेरे को ये चीज़ समझ आई कि आपको इमीडिएटली कोविड नहीं होता है. जैसे आप आज किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से मिले इट्स नॉट नेसेसरी कल आपको सिम्टम्स आ जाएंगे. सो एज पर व्हाट डॉक्टर सेज कि आपको सिम्टम्स डेवलप करने में 5 to 10 days लगते हैं. ठीक है. तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स को 14 days के लिए मॉनिटर किया जाता है कि इन केस दे डेवलप एनी सिम्टम एंड ऑन 7th day दे आर रीटेस्टेड ताकि चेक किया जाए कि उन्हें कोविड हुआ है या नहीं हुआ. सो इट्स नॉट लाइक कि इमीडिएटली आपको सिम्टम्स आ जाएंगे और इमीडिएटली यू गेट द टेस्टेड या आप टेस्ट कराएंगे वो टेस्ट एक्यूरेट रहेगा क्योंकि आपके सिम्टम्स डेवलप होने में एंड टेस्ट में आने में टाइम लगता है. ठीक है. सो दैट इज़ वन थिंग आई वांटेड टू हाईलाइट. So other than that, let's get started. So we landed to Maldives on 26th March. Okay. And
I had a early morning flight. हमारी 8 o'clock की flight थी, तो we had to be at airport around 5. So I had pretty sleepless night on 26th, and traveling था, flight था, and then we came here. But यहाँ आगे भी हम सुधरे नहीं, so we were so excited to see the beach and the breathtaking landscapes, and it was all so beautiful कि we couldn't hold ourselves, और हम आते ही पानी में चले गए, and we were roaming around the beach, and so although I was very tired, I did not sleep well, but I got so much energy seeing this beautiful place here कि we were just we enjoyed our first day. तो हम beach पे भी गए and went into water. So by evening, when I felt a little tired, I thought I'll go and have a good uh, bathe there, and that is when I actually felt the chills. So I was bathing, and then suddenly I felt like shivering. जैसे ठंडी में नहीं होता है एकदम कड़कड़ाने वाली ठंडी, जब आपके दांत कड़कड़ा जाते हैं. So I felt chills like that. So I immediately came out of the shower, and I went to the room, and even with the AC my body was shivering. And I thought कि ठंडी लग गई बहुत पानी में रह लिए, और इमीडिएटली मैंने एसी वगैरह ऑफ किया, एंड आई थॉट आई मस्ट गो टू स्लीप. आई थिंक मैंने अपनी बॉडी कुछ ज़्यादा एक्सर्शन कर दिया. आई डिड नॉट स्लीप वेल. So day one, I had chills, like I had shivers. AC की ठंडी बहुत लग रही थी, and रात को मुझे थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ रहा था. नाउ आई डिडंट हैव अ थर्मोमीटर बाय देन, बट आई टुक इट ऑल कि हाँ एक्सर्शन हो गया जर्नी की वजह से. सो आई जस्ट थॉट कि आई विल हैव अ गुड नाइट स्लीप एंड दैट शुड बी ऑल राइट. So coming to day 2, now I slept on 26th. On 27th morning I got up and I felt pretty fresh, and I thought हाँ ठीक है, थकान हुई थी जर्नी की, and I felt energetic, and फिर से went out. हम बीच पे गए अगेन. एक्सर्शन हुआ काफ़ी. नाउ डे 2 में क्या हुआ, जब रात तक आते आते I felt so tired. I'm generally a very energetic person कि अच्छा घूमने जाना है, okay, ये करना है, okay. I'm always that yes kind of a person कि हाँ I'm very energetic to go out. But this time I was like, यार I think I need to go and sleep. I think I'm feeling I need some rest. And I got tired by end of the day. I mean इतना tired कि we had our beach dinner planned up, and I was like just getting the plates from the restaurant to the place where they set up our dinner. When that got tiring for me, मतलब चल के जाना था, थोड़ा सैंडी एरिया था, एंड आपको चल के जाना था, अपना खाना लेके वहाँ जाना था. तो जस्ट वो बीच पे चल के जाना और अपना खाना लाना मेरे लिए टायरिंग हो गया था. So that night, again I felt uh, pretty aged, and I was like, dude, I'm aging now. My day 2, I felt chills and my legs started hurting. मतलब पूरे पैर ऐसे दर्द हो रहे थे, जैसे आप जिम में स्क्वाट्स मारते हो एंड आपके लेग्स हर्ट करते हैं. डे 2 आई हैड chills. I had this tiredness, and my entire body, especially the legs, were aching a lot. And रात को फिर मुझे थोड़ा बॉडी टेम्परेचर लगा, बट देन आई जस्ट थॉट आई टेक अ पैरासीटामोल, एंड अगेन सोचा कि अभी थकान है बॉडी के अंदर, एंड आई टुक अ पैरासीटामोल एंड आई स्लेप्ट ऑफ. दैट वाज 27th. Coming to 27th was the day when the reports, when our sample was collected, and अब 28th को मेरा report आना था. Now coming to day 3, in the morning we were told we were told कि ma'am, just stay at your room, don't go anywhere, you are tested positive. And that was the heartbreaking moment. I was not at all expecting that. We generally have this mentality like we are taking all precautions. हम 24th को negative करके आए हैं test. We've not met other couples also. Like हम लोग नहीं, हमने इतना socialize नहीं किया because of COVID. And we were like,
कैसे हो सकता है, वी वर इन दैट डिनाइल स्टेट. बट ठीक है, on 28th morning they informed that I have COVID, and immediately they shifted Pratik to another beach villa, so that क्योंकि he came as negative and I was tested positive, so immediately हमारा हमें isolate कर दिया गया था. And from there I was told कि हाँ आपको अलग अलग जगह isolate करना है as per Maldives government. If a couple plans to stay together, so once the positive case recovers, after that the direct contact has to serve 14 days of quarantine. So that is 28 days. So we thought नहीं, हम isolate हो गए on 28th morning जैसी हमें report मिली. Now 28th again I had the chills were there, I had body ache. Now I started feeling very tired, like even if I'm going from my bed to the washroom and coming back, उसमें भी मेरे को बहुत ऐसा सांस फूल रहा था. एंड आई वाज लाइक यार व्हाट्स हैपनिंग, आई वाज feeling so tired, and all of a sudden from a healthy person you turn into this unhealthy person who can't even talk on phone. अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो आपको सांस चढ़ रहा है, आप बेड से उठ के थोड़ा देर वॉक कर रहे हो, यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड एंड एकदम एग्जॉस्टेड, लाइक आपने 3-4 घंटे काम किया हो. सो that was happening on day 3. So I remember that time also I had that little fever, and I did not develop any cough or anything. Yeah, I had that fever. And coming to day 4, 29th. So already हमें एक दिन हो गया था isolate हुए हुए. 29th morning I felt excessive fatigue. Now अब मुझसे बहुत ही 29th was the day when I was feeling extremely weak. Like मुझे चक्कर आ रहे थे. I was feeling so dizzy. I was feeling so ऐसा इतना nausea feel हो रहा था. I didn't feel like eating anything. And that is when the doctor came, and I was like, doctor, I'm feeling so dizzy. I was feeling that everything is moving around. So my head was spinning, and I felt very weak that day. I was not having any appetite to eat anything. And that was one day where I felt very weak. So the doctor also checked my BP, and it dropped to 87/42. So then is when he said that I need to be hospitalized because my BP went really low. मुझे तब ORS solution दिया था. And by this day I was not given any medication. I was only eating paracetamol when I used to have fever. So 29th को on my day 4th I was sent to the hospital. I was admitted to the hospital. There I had low BP. I was feeling very dizzy. I had this loss of appetite. My head was spinning. I had that leg pain, lot of severe leg pain, and lot excessive fatigue. Now my day 5 was at the hospital, and that is the time when I started having high fever. और हो सकता है मुझे पहले भी फीवर हो, but I didn't have a thermometer to check, honestly. At the resort, I didn't have the thermometer to check my temperature, but now at the hospital they were checking my stats, so I know my fever was going around 101 to 102 all the time. So मेरे को पैरासीटामॉल देते थे, मेरा फीवर कम हो जाता था, एंड जैसे ही 6 hours 7 hours हो जाते थे, my body temperature used to rise again, and then मेरा temperature फिर बढ़ जाता था, and I used to take a paracetamol and go to sleep. I had high fever. By this time I got stuffy nose, like सांस नहीं ली जा रही थी, block nose हो रहा था. My eyes got swollen. मतलब हॉस्पिटल में टीवी था, but टीवी देखते हुए eyes जलते थे. I had this joint pains and fatigue. Yeah, again कम मतलब हॉस्पिटल का छोटा सा रूम और उसमें थोड़ा सा वॉक कर लिया तो उससे आपको थकान हो जाती थी. तो it was like that. Day 6 my fever got subsided. Now मेरे को mild fever रहता था, around 100 तक जाएगा.
मेरा फीवर सबसाइड हो गया था, बट आई स्टार्टेड हैविंग दिस कंजेशन इन माई चेस्ट। तब हल्का हल्का पेन होता था इन द चेस्ट समटाइम्स, जैसे इट्स नॉट कॉन्स्टेंट पेन, लाइक नॉट लॉट ऑफ पेन, जैसे कोई प्रिक कर रहा हो, लाइक लिटिल पेन हियर एंड देयर आई यूज टू फील। एंड I don't know what was that, but I told the doctor, and he said he was hearing some crackling sounds when I was breathing. So he thought, and then he did my X-ray and noticed that there was some infection in my lungs. So that is where they started giving me medication. तो अब मेरा डे 6 पे मेरे को एक्चुअली मेडिकेशन दिया गया, मुझे एजिथ्रोमाइसिन दिया गया था, एलेग्रा दिया गया था, paracetamol if fever, लेकिन मुझे तब फीवर नहीं हो रहा था, so I was not taking it, but yeah, these were the medication, and vitamin C दिया गया था as a supplement. So day 6 में finally I thought I got some sort of antibiotics to fight with it, but yeah, please don't take any medication without your doctor recommendation. I'm just telling what was given to me. I was not able to breathe. Like my nose were completely blocked nose, and I had this congestion, and I was totally breathing from my mouth, and it used to get so tiring कि I was not able to sleep also. So that was day 6. So मेरे को nebulizers दिए गए थे. So nebulizer एक tool है जिसके अंदर it's kind of steam only. जैसे steam आप लेते हैं, inhale करते हैं, तो they put little medicine and they put it on your nose. I have a video where I've shown how they used to give the treatment. But हाँ, तो मुझे day 6 पे nebulization दिया गया. Mild fever, congestion in chest. I had a blocked nose. Body ache मुझे रहा था पूरे time. I lost my smell. I couldn't smell. So I remember I got a perfume near my nostril and I couldn't even smell that. So I was not able to smell anything, and I developed this chest pain as well. And I was not feeling like eating anything. So day 7, मेरा fever जैसे ख़त्म हुआ ना, I started this congestion thing. It was not like parallelly, but मेरा fever ख़त्म हुआ और मेरी congestion बढ़नी शुरू हुई. So I had this nasal congestion, chest congestion. I was not able to breathe properly. I lost my smell, and smell तो अभी भी नहीं आई. It's already been 14 days, but I've not got my smell. But joint pains and body aches, तो ये रहा था. So these were the day 7 symptoms. From day 8 onward, it started improving. That could be because मेरे को day 6 से medication दिया शुरू कर दिया गया था. Before that, I was not given any medication, and I think it was increasing because of that, because I was literally on no medication. I just had one paracetamol, and doctor used to say कि COVID का कोई medicine है नहीं, and they just treat on the symptoms. So I think as my symptom was growing, my medication was prescribed accordingly. So उससे पहले तक I was not given anything till my day 6. I was just eating one paracetamol when I used to have fever. Other than that, there was nothing. अच्छा, उसके अलावा जो डे 8 से मेरी इम्प्रूवमेंट चालू हो गई थी, लाइक आई हैड दैट कंजेशन, मतलब कंजेशन थोड़ा कम हो गया था. डे 7 पे आई ऑल्सो हैड दिस हेड एक, लाइक माई बैक ऑफ द हेड एंड दिस एरिया, लाइक ये एरिया बहुत हर्ट कर रहा था. आई जनरली आई एम नॉट अ पर्सन जिसको इतना जल्दी हेड एक होता है अनलेस आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम और एनीथिंग. बट यहाँ मैं आई वॉज टेकिंग a lot of rest, but I had this severe pain in my head, in the back of the head and little in the front. But that was my day 7. So from day 8 onwards, मेरे symptoms कम होते गए कि the only symptoms right now I have at the moment is that I can't smell anything. I still can't smell anything. I don't know how long it will take to recover, but other than that, I feel that I've gained back my energy. Okay, so इस दौरान मैंने क्या किया? Initially, I was only eating paracetamol as I mentioned. उसके बाद doctor gave me one azithromycin, Allegra, and vitamin C, which I used to take. Other than that, the home remedies which I did, I used to take steam at least twice or thrice a day, like morning, afternoon, and evening. I used to take steam. यहाँ पे I didn't have an inhaler, so I used to use the hotel kettle for the steam purpose.
और नॉर्मल पानी को गर्म करके आई यूज टू टेक द स्टीम. अदर थिंग, आई यूज टू गार्गल ट्वाइस और थ्राइस अ डे जैसे होता था. तो वन वाज विद सॉल्ट वाटर. अदर थिंग एक बीटाडिन सॉल्यूशन था. So I was doing gargles with that betadine solution. That is also I repeated twice or thrice a day. I tried to drink a lot of hot water. And the other thing which I did some breathing exercises. Anum Vilom, where you take close your one nostril, breathe, and then close this one and exhale. So just look for Anum Vilom. I'll tell you, बहुत difficult होगा करना. ठीक है, जब आपको ऐसे कोई कंजेशन होती है, इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑल दिस, बट ट्राई जितना हो सकता है धीरे धीरे. जैसे जैसे आप इम्प्रूव होंगे यू विल बी एबल टू डू इट इन अ मच बेटर वे. जैसे आप भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं. व्हेन यू टेक ब्रेथ्स, आप उस ब्रेथ को होल्ड नहीं कर पाएंगे. सो डू जितना आप होल्ड कर पाते हैं. आप होल्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, जस्ट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, दैट्स इट. बट एक्चुअली ये सब आपको हेल्प करता है मेंटली. When you breathe in and breathe out or do Anum Vilom, I felt that I used to feel very light on my head when I used to do these breathing exercises. So ज़रूरी नहीं कि आपसे हो पाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट होता है with this congestion doing any sort of breathing exercises. So जितना आपसे होता है आप उतना करिए. जैसे थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ अभी congestion नहीं है and I can do it, then just do a little while and then take rest and then, but kariye. So I used to try these breathing exercises twice a day again, and trust me, it really used to help me relax my head. I used to feel light when I used to do this. So I hope ये वीडियो आपको हेल्प करेगा. इवन इफ इट हेल्प्स वन पर्सन, दिस वीडियो विल सर्व इट्स पर्पस. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, anything you want to ask me, feel free to drop a comment or just drop me a message if you're connected on social media. Yeah, till then, take care and take good care of yourself. Stay hydrated, eat wholesome meals, and yeah, take care. Bye bye.